Hello students, in today's lecture we are completing the miscellaneous exercise from question number 11 onwards. Also students, we are completing the chapter inverse trigonometric function. So let's roll. Now in the question number 11 you want to prove that tan inverse of the full bracket is equal to pi by 4 minus half cos inverse of x. So students, पहला हिंट आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि बाहर कौन वेट कर रहा है, tan इनवर्स. तो पूरे ब्रैकेट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, tan फंक्शन में. ओके, सो उसको tan फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, विच यू रिमेंबर इन द लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको दिया हुआ है. इफ यू फाइंड अ एक्सप्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, वी आर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा और cos थीटा, कोई भी एक ले लो, it would work out. Okay, so with the help of this substitution we are going to convert this full bracket in terms of a tan function, so that in the last step we can use the property tan inverse of tan x is equal to x, and hence you get your RHS. So let us see how to convert this full bracket in terms of tan. So we are doing the substitution in the LHS. So we are going to say put x is equal to cos 2 theta. So from this we can say that 2 theta is equal to cos function यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा cos inverse of x. So therefore I can say that my theta is half cos inverse of x. ये तो यहाँ पे चले गया. Okay, now let us move to the LHS. तो जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे you are going to put cos 2 theta. So we are going to get tan inverse of root of 1 plus cos 2 theta minus root of 1 minus cos 2 theta upon root of 1 plus cos 2 theta plus root of 1 minus cos 2 theta. Okay, now let us simplify. If you remember in your 11th standard students, you have studied one beautiful formula 1 plus cos 2 theta. आप बोलेंगे सर इसमें क्या ब्यूटीफुल है. So 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Okay, so let us apply this formula over here. So what do we get here is tan inverse of root of, इसके बदले में ये पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 cos square theta माइनस रूट ऑफ, इसके बदले में ये पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 sin square theta. वही स्टेप आप डिनोमिनेटर में दिखा दो तो यार आई एम गोइंग टू गेट 2 cos square theta प्लस रूट ऑफ, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 sin square theta, ब्रैकेट क्लोज्ड. Now students, carefully observe this bracket and tell me what is the simplification step you will do. ये स्क्वायर रूट टर्म को अगर निकाला जाए तो दिस टर्म इज गोइंग टू बिकम रूट 2 cos थीटा, ये टर्म हो जाएगा रूट 2 sin थीटा, एंड सेम थिंग फॉर द डिनोमिनेटर. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट इज tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा रूट 2 cos थीटा, दिस विल बिकम माइनस रूट 2 sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin theta. Okay, anything getting cancelled over here? If you observe root 2 is common everywhere, so root 2 को उड़ा देते हैं. So we are just left with tan inverse of cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta. Okay students, now you remember ऐसे type of questions में either we take cos theta common from numerator and denominator, or we divide numerator and denominator by cos theta. It's one and the same thing, so as to convert this full term in terms of tan function. So in the next step what do we do is, let us say I am dividing numerator and denominator by cos theta. तो मुझे क्या मिलेगा, cos theta minus sin theta अपन यहाँ पे आ जाएगा cos theta. Likewise डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है, cos theta plus sin theta and upon cos theta. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos theta कैंसिल, अरे वैसे मत करना, यू विल रीड दिस स्टेप. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्प्लिट द डिनोमिनेटर. स्प्लिट द डिनोमिनेटर मींस cos theta को दोनों को दे दो, सो हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, इमेजिन यू आर स्प्लिटिंग विद बोथ द टर्म्स, तो cos अपॉन cos मिलेगा 1 माइनस sin अपॉन cos मिलेगा tan थीटा अपॉन, इधर भी डिनोमिनेटर स्प्लिट करो तो मिलेगा 1 प्लस tan थीटा. ओके, इसका भी फॉर्मूला पड़ा 11th स्टैंडर्ड में. ओके, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, इट इज सेम एज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस फुल ब्रैकेट वी कैन राइट tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा. सो आ गया ना हमारे पास tan फंक्शन. सो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. सो नाउ यू कैन यूज द प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों, tan इनवर्स ऑफ tan x इज x. तो यहाँ पे x क्या है हमारा, दिस इज योर x. So we are left with pi by 4 minus theta. But what is your theta?
half cos inverse of x. So which we get pi by 4 minus half cos inverse of x, and that you can say is your RHS. Hope students you enjoyed the sum. Let's move to the next one. Okay, so in the question number 12, you want to prove that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse of 1 upon 3 is 9 by 4 sin inverse of 2 root 2 upon 3. Now students, carefully observe the question, and if you observe, RHS में constant term है 9 upon 4, वो constant term LHS में भी है. कैसे? If you take 9 upon 4 common from these two terms, we are going to get one term 9 upon 4 in the left hand side as well. तो पहले देखते हैं common लेके कुछ simplify होता है. So we are going to start with LHS, taking 9 upon 4 common between these two terms. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचने वाला है? 9 तो बाहर गया है, तो we are remaining with pi, and in denominator since there is 8, तो you will be left with pi by 2. Minus 9 by 4 तो बाहर गया है, तो you are left with sin inverse of 1 upon 3. Now students, आपको एक प्रॉपर्टी याद है, sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. Okay, so can you say that pi by 2 minus sin inverse x is cos inverse x? तो इज इट लाइक pi by 2 minus sin inverse x, x के बदले क्या है 1 by 3. तो ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आप बता सकते हो क्या मिलेगा? cos inverse of 1 upon 3. So this is your LHS. But if you observe it RHS, you have 9 upon 4, yes, but you have cos inverse, जबकि हमको चाहिए sin inverse. So we can convert cos inverse in terms of sin inverse with the help of a samosa, I mean triangle. So what we do is, let cos inverse of 1 upon 3 is equal to x. So therefore we can say that cos x is equal to 1 upon 3. Now let's go for the samosa. So if you make a triangle with a 90 degree, so cos theta क्या है? Adjacent upon hypotenuse. So adjacent is 1, hypotenuse is 3. So by Pythagoras theorem हमको मिलेगा ये साइड square root of 3 square minus 1 square, तो square root of 9 minus 1 which is root of 8, which is you can say 2 root 2. root 8 is 2 root 2. तो इसमें से हमको अभी क्या चाहिए? साइन का वैल्यू चाहिए, बिकॉज RHS में साइन टर्म इज प्रेजेंट. सो साइन x का वैल्यू क्या मिलेगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 2 root 2 upon 3. So therefore we can say that x is sin inverse of 2 root 2 upon 3. But what was your x students initially? X was cos inverse of 1 upon 3. Okay, तो अभी LHS जो हमारा था initially 9 upon 4 cos inverse of 1 upon 3, उसके बदले क्या ना रेट 9 upon 4 cos inverse of 1 upon 3 से मैं sin inverse of 2 root 2 upon 3. So which is your RHS. Hope students you got it. Okay students, so question number 13 is solve the following equations. Solve the following equation means जो आपको equation दिया गया है उसको simplify करो and get the value of x. So the given equation is 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. Now students, if you observe the LHS, it is like 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x. So we have one property in terms of 2 tan inverse of x. क्या है उसका property? We are getting tan inverse of 2x upon 1 minus x square. So instead of 2 tan inverse x, we can substitute tan inverse of 2x upon 1 minus x square. So if you compare this two term, in place of x, what do we say? Cos x. तो हम लोग ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं by putting x is equal to cos x. तो your left hand side now becomes tan inverse of, जिधर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको पुट करना है cos x. So we get 2 cos x upon 1 minus cos square x is equal to right hand side remains as it is. So tan inverse of 2 cosec x. Okay, so you can just say tan inverse and tan inverse gets cancelled. Okay, so we are just left with 2 cos x upon 1 minus cos square x is sin square x is equal to right hand side पे we have 2 cosec x. 2 gets 2. So we are left with cos x upon sin square x is equal to cosec x is 1 upon sin x. एक sin x term cancel हो जाएगा. So we are just left with cos upon sin is equal to 1. So we can say that cot x is equal to 1. Now we can say x is equal to cot inverse of 1. What does that mean? कि cot function के कौन से angle का value 1 होता है, and we very well know it is pi by 4. So therefore you can say the value of x is pi by 4. That's your answer. Okay, let's move to the next one. Okay students, so question number 14 is again solve the following equation. One equation is given to you, you want to find the value of x. Now students, let us understand how to simplify the equation. If you carefully observe the left hand side, can you say it is of this form? Tan inverse of x minus y upon 1 plus xy? Yes or no? I would say yes, because ये जो डिनोमिनेटर टर्म है, क्या मैं उसको
1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ. एंड नाउ इफ यू कंपेयर तो आपको ऐसे दिखेगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई. मीन्स x के जगह पे क्या है 1 और y के जगह पे क्या है x. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x minus tan inverse of y. So if you use this property on the left hand side, what are we going to get is tan inverse of x के बदले 1 minus tan inverse of y के बदले we are going to get x is equal to half of tan inverse of x. Okay students, now tan inverse of 1 means tan function के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है, it is pi by 4. So इसके बदले हम लोग लिखेंगे pi by 4. You can take this term on the right hand side, so we get half tan inverse of x plus tan inverse of x. Okay, so pi by 4 is equal to, if you take LCM, you are going to get 3 upon 2 tan inverse of x. तो अभी 3 upon 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. So we are going to get pi by 4 into, ये हो जाएगा 2 by 3 is equal to tan inverse of x. So 2 1s are 2 2s are. So we are left with pi by 6. So we are getting pi by 6 is equal to tan inverse of x. Now if this tan inverse goes on the left hand side, it becomes tan function. So we are getting tan pi by 6 is equal to x. So x is equal to tan pi by 6 means x is equal to tan 30, and tan 30 we very well know it is 1 upon root 3. So students, 15th question is a MCQ type question. You have sine of tan inverse of x is equal to, and you have to choose one option. So let us simplify the question. Since there is sine function waiting outside the bracket, so our job is to convert the tan inverse of x term to sine inverse of something. Okay, so इसको sin inverse में convert करने के लिए we are going to take the help of a samosa. So we can say let tan inverse of x is equal to, say theta for example. So we can say tan theta is equal to x. Okay, so we'll draw one triangle now. This is theta, this is 90 degrees. Now tan theta is x means you can say it is x upon 1. So tan theta is opposite upon adjacent. So by Pythagoras theorem, you are going to get this side as root of 1 plus x square. Okay, so इसमें से sin theta का वैल्यू निकालो. So sin theta is opposite upon hypotenuse. तो x upon root of 1 plus x square. So we can say from here that theta is sin inverse of x upon root of 1 plus x square. लेकिन हमारा थीटा क्या था, tan inverse of x. Okay, so tan inverse of x के बदले we can write sin inverse of this term. So therefore your question is now sin inverse of x upon root of 1 plus x square, and sine of sin inverse x is what, x. So according to the property your answer is x upon root 1 plus x square, which is your option number D. Okay students, let's move to the next one. Okay students, in the question number 16 we have been given sine inverse of 1 minus x minus 2 sine inverse of x is pi by 2. You want to find the value of x. So students, the best method to solve this is satisfying the option. So हर एक ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे और जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा यू कैन चूज दैट एज योर आंसर. सो स्टार्टिंग विथ ऑप्शन नंबर ए विच इज 0, हाफ. ओके, सो लेट्स पुट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विच इज 0. सो आपका जो LHS है वो हमको क्या मिलने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 इज 1 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0. ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. So your answer is pi by 2, which is your RHS. Okay, so 0 satisfy हो रहा है. Let us check for half also. So if you put the value of x as half, तो जो आपका पहला टर्म है वो आपको क्या मिलेगा, sin inverse of 1 minus half, which is half, minus 2 sin inverse of half. Now what is sin inverse of half? Sin के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ है, pi by 6, 30 degrees. तो pi by 6 minus 2 times again sin inverse of half is pi by 6. So what we are getting is pi by 6 minus pi by 3, which comes out to be 30 minus 60 is minus 30, मतलब minus pi by 6. So that is not equal to your RHS. Okay students, so option number A incorrect है. लेकिन students, if you go the smart way, 0 satisfy हो रहा था. Okay, so 0 is a valid answer. तो 0 अकेला देखो ऑप्शन नंबर C में प्रेजेंट है. Okay students, so option number C is your answer. No need to verify the other options. Okay students, so here we are on the last question of this chapter, which is 17th one. So let us say you want to find tan inverse of x upon y minus tan inverse of x minus y upon x plus y. So दोनों टर्म को अगर ध्यान से देखेंगे, so are they resembling this property, tan inverse of x minus tan inverse of y, which we very well know it is tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. Okay, so इन दोनों टर्म्स को अगर इससे कंपेयर किया जाए तो x के बदले we are going to put x upon y and y के बदले we are going to put this bracket. Okay, so let us use this property and simplify.
So what do we get is tan inverse of, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, x के बदले we are putting x upon y, y के बदले we are putting this bracket upon 1 plus x के बदले x upon y and y के बदले x minus y upon x plus y. So now let's just simplify by taking LCM. So ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर आपस में बैठ जाएंगे. So what do we get is tan inverse of x into x plus y, ये यहाँ पे गया, माइनस साइन एज इट इज, ये यहाँ पे जाएगा तो y into x minus y upon we are going to get y into x plus y the whole upon, यहाँ पे जाएगा, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो वी गेट y into x plus y plus x into x minus y upon y into x plus y. Okay students, now what do we observe is this term gets cancelled out. Now let's just open the bracket and see what do we get. So we are going to get tan inverse of, बोलो ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा माइनस वाई एक्स एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इन द डिनोमिनेटर वी गेट वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर minus xy. So let's just see what is getting cancelled. Xy minus yx cancel and yx minus xy cancel. So we are just left with tan inverse of, क्या बचा यहाँ पे, x square plus y square upon y square plus x square which are the same term. So ये cancel हो जाएंगे. So you get tan inverse of 1 which is we very well know, pi by 4. So your option is number C. So that's your answer. Okay students, so this completes our chapter inverse trigonometric function. Hope you understood the concepts of the chapter very well and hope you enjoyed the chapter as well. This is your math mentor and your friend signing off for the day. Take care and goodbye.